हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम है देवाशीष एंड दिस इज़ एन एड शार्पनर प्रोडक्शन। थोड़ा सा वीक हूँ, कोविड के वजह से थोड़ी हालत बुरी है और मैं वीडियोस पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ जो भी प्लान किए थे। कोई बात नहीं, मैं ढूंढ रहा था मेरे खजाने में कुछ है क्या आपको दिखाने के लिए जो आपको अच्छा लगे। लकीली मुझे एक वीडियो मिला जिसमें मैंने मेरे इमटेक प्रेजेंटेशन का कुछ बिट रिकॉर्ड किया हुआ है। अभी इमटेक प्रेजेंटेशन का बिट मतलब ये मेरा एक हार्डवेयर पे प्रोजेक्ट था, उसका बिट है। और बेसिकली ऐसा था कि मैं हाइड्रो टरबाइन कंट्रोल्स पे काम कर रहा था और मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हाइड्रो टरबाइन चल रहा है फ़िलहाल उस पर मैनुअल कंट्रोल था। मतलब अगर आप लोड ऐड करते हो तो टरबाइन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो एक मैनुअल वॉल था उस टरबाइन के पाइप पे, जो ओपन करोगे तो फ्लो बढ़ता था और फिर फ्रीक्वेंसी नॉर्मल आ जाती थी। रिस्पेक्टेड प्रोफेसर जो थे मेरे गाइड जो थे प्रोफेसर भट्टी, उन्होंने मुझे चांस दिया। मैं इंस्ट्रूमेंटेशन का स्टूडेंट था तो उन्होंने मुझे चांस दिया इस पर ऑटोमेशन करने का। तो जो मैनुअल वॉल्व वगैरह था ये मुझे हटा के उसको ऑटोमेट करना था। इसके फ़ायदे ये थे कि जहाँ जहाँ पे भी ऐसी सिस्टम्स लगेंगी जो स्मॉल हाइड्रो टर्बाइंस लगेंगे, वहाँ से हम स्पीड गवर्नर की ज़रूरत हटा सकते हैं जो कि बहुत महंगा होता है। तो हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं हल्की सी। तो मैनुअल कंट्रोल हो जाएगा और रिमोटली लोग कंट्रोल कर पाएंगे। मतलब अपने घर पे बैठ के कंप्यूटर से ही चला पाएंगे। नहीं तो लोकल हमको रेसिडेंट लोग लगते हैं जो कि जाके वहाँ पे चेक करने की सब चीज़ चल रही कि नहीं। तो इतनी सारी चीज़ें थी। बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये था कि बस ऑटोमेट करना है, एक फ्लो वॉल लगा के फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, फ्रीक्वेंसी फीडबैक लेना है। अगर ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी तो हमें फ्लो कम पास करना है, फ्रीक्वेंसी कम है तो हमें फ्लो ज़्यादा पास करना है। ये था, ये हमने लैब से अचीव किया। ये जो वीडियो है जो मैंने इसमें पोस्ट किया उसमें दो पार्ट है। पहला वीडियो की पहली ये जो सिस्टम सब थी इसको मैंने पहले कंप्यूटर में लाया। जो भी डेटा मिल रहा था, जो भी डेटा वगैरह था, जो भी फ्रीक्वेंसी का डेटा था वो मुझे कंप्यूटर में लेना था। उसमें मैंने डेटा एक्विजिशन कार्ड यूज़ करके सबसे पहले कंप्यूटर में डेटा लिया। उसके बाद उस पर कंट्रोलिंग हुई। और खैर वो वॉल एक बटरफ्लाई वॉल आप देखोगे इस पर जो एक्चुअली माउंट होने वाला था सिस्टम पे, जो नहीं हुआ था अभी तक। तो मुझे वो वीडियो रिकॉर्ड वैसे ही करना पड़ा और फिर मैं मैन्युअली फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा था। तो फिर वो वॉल बंद होता था और फिर मैं मैन्युअली फ्रीक्वेंसी कम करता था तो वॉल ओपन हो रहा था। यही वो बिट है। ये बिट देख के शायद आप खुश हो जाओगे कि यार इतने बढ़िया बढ़िया इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मुझे वहाँ पे खेलने को मिला। बहुत लकी समझता हूँ खुद को मैं कि मैं IIT दिल्ली जैसी जगह पे जाके इतने महंगे इतने बढ़िया इंस्ट्रूमेंट्स के साथ खेल पाया। जो वो बॉल था ना, वो जो बटरफ्लाई बॉल जो ब्लू कलर का आप देखोगे, इतना भारी था वो। मतलब लिटरली कभी कभी मतलब दो हाथ से भी उठा के थोड़े थक जाते थे। दो लोग लगते थे कभी कभी उठाने के लिए। कम से कम 1-1.5 लाख कीमत थी उस चीज़ की, काफ़ी महंगा था। उसके बाद एनआई का स्टेपर मोटर ड्राइवर भी था जो कि करीबन और 25,000 का था। पावर सप्लाई था। तो महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट्स पे खेलने को मिला। काफ़ी लकी है यार कि IIT जैसी जगह जाके आपके ना IIT इतना सारा खर्च करती है, आपको अच्छा लगता है। और मुझे नहीं लगता कि मेरे बीटेक के कॉलेज में सब पॉसिबल था क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स बहुत महंगे हैं। और आप इंस्पायर हो जाओ ये वीडियो देख के, क्योंकि ऐसे ही आपको भी खेलने को मिलेगा। बढ़िया कूल एक्सपेरिमेंट्स आप कर पाओगे। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपको अकेले काम करने को मिलता है। तो ऐसा नहीं होता कि ये काम नहीं कर रहा और वो काम नहीं कर रहा। आप अकेले आपकी प्रोग्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो और ये बहुत बढ़िया चीज़ है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप ये वीडियो देखो, इंस्पायर हो जाओ, क्योंकि इंटरव्यूज़ हैं। अच्छा परफॉर्म करो इंटरव्यूज़ में एंड ऑल द वेरी बेस्ट। So this is a Francis turbine, and the turbine is moving at a particular RPM. The shaft is moving, as you can see here. The shaft is moving with a particular RPM. This RPM is shown here. The currently the RPM is 1001, and my aim is to get this particular RPM into the system through this data acquisition card into my system. Let us check. Yes, the RPM is being shown. 1000 RPM is shown here on the screen also. It is 1003 and around 1006. We can change the RPM through this particular wall. We have increased the RPM. Let us now see. The RPM is 1277. Let us see what is the RPM here.
RPM is around 1277 here also. So this particular program is running. The spikes you see here are the peaks, the number of pulses occurring in 1 second around the shaft. I can show you the program. This is the LabVIEW program for this particular RPM logging. So this is how we can measure the RPM. So this is the program to check the butterfly valve rotation according to the input frequency. In the picture you can see the butterfly valve along with the stepper motor, which is connected to the stepper motor drive, and the 24-volt power supply. As you can see through the LAN wire, the drive is connected to the computer, and we will move this valve according to the input frequency. As you can see, the valve is completely open right now, and when the frequency will be greater than 1000, which is the reference, this valve will close. Now let us check the program, the LabVIEW front panel of this particular program. If we run this program and increase the frequency, that means if frequency is greater than 1000, the white line which shows the actual frequency 1241, you can see the valve rotating and closing down, and because of this closing down, the frequency can reduce and it goes to its actual limit, the permeable limit, which is 990 to 1010 RPM. Now if the valve is closed, as you can see the valve is closed, that means the frequency is going down. So if frequency is lesser than 1000, the valve starts to open. As you can see in the figure, the valve starts to open, allowing more water to pass, and hence the frequency will increase, and the valve will stop when the frequency will be around 1000. As you can see, the valve is stopped now. So this is how the butterfly valve control is achieved.